Let's analyze Sensex for Monday. So यहाँ पे let's go on to the weekly time frame और weekly time frame पे I can see that price has closed a bearish candle but towards the end it has seen some amount of bullishness और यहाँ पे if you see close तो these two candles low was broken but price couldn't sustain below these lows and price closed above these lows. So the weekly looks bearish but has a little bit of bullishness from the bottom. और डेली पे देखेंगे तो डेली इज लुकिंग अ लॉट मोर कंफ्यूज क्योंकि इस कैंडल में बाइंग हुआ है देन इन दिस कैंडल सेलिंग टुक प्लेस लेकिन बॉटम से अगेन स्ट्रॉन्ग बाइंग टुक प्लेस नेक्स्ट कैंडल शुड हैव बीन सेलिंग इंस्टेड यहाँ पे बाइंग हुआ है फिर यहाँ पे सेलिंग हुआ है सो प्राइस इटसेल्फ इज अ लॉट कंफ्यूज्ड नाउ इफ वी मूव ऑन टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यू कैन सी कि यहाँ पे प्राइस मूव्ड ऑफ दिस जोन सिमिलरली यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है सिमिलरली यहाँ से एक आया था यहाँ से भी एक मोमेंटम आया है और यहाँ से एक मोमेंटम आ रहा है सेलिंग देखेंगे तो सेलिंग टुक प्लेस फ्रॉम ईयर एंड ईयर सो ओवरऑल दिस जोन इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव आ रही है एंड एट द सेम टाइम this zone is acting as a resistance pushing the price down कि यहाँ पे prices accept नहीं हो रहे हैं to push the price up and the sellers are getting dominant of this zone. So for Monday, two probabilities can play out कि these buyers might win कि यहाँ से जो momentum produce कर रहे हैं these buyers might win and push the price higher or else the sellers who are accumulating these positions will win and push the price down और ये सारे buyers है they will start to cover their position and price will fall from there. So let's analyze what happened on the 5 minutes. So 5 minutes पे volume profile plot करेंगे तो you can see that price in the start formed a value right here. It moved down for bearish price discovery. These prices were not accepted so price moved back inside the value area. यहाँ पे फिर से selling took place and then price again moved down for bearish price discovery. लेकिन अगर we extend the volume profile further, you can see that huge amount of volumes came along here near this level, and some huge volumes came somewhere around here, and the price action following those volumes is towards buying side. So volume profile से दिख रहा है if this high volume that came in over here is for buying, यहाँ से price need to move higher. और if this is not for buying, if this volume didn't come for buying, तो यहाँ से price will fall aggressively for further sell side price discovery. So our game plan for Monday will be on both sides and it will be based on how the price opens and what the initial move of price is. So let's say price इस zone में यही कहीं पे open होता है flat somewhere along this zone. तो यहाँ पे I will be looking for one thing कि यहाँ पे अगर buyers आते हुए दिखेंगे कि the sellers are not dominant and the buyers start to push the price up तो यहाँ पे I will look for a buy side trade. Let's say gap up भी open होके price if moves down तो इस zone में I will look out for some bullishness और यहाँ पे I will go for a buy side trade. या फिर प्राइस यही कहीं पे ओपन होके द फर्स्ट मूव इज अग्रेसिव टुवर्ड्स बाइंग एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो वहां पे भी आई विल लुक फॉर अ बाय साइड ट्रेड. नाउ लेट्स से ये जोन में प्राइस ओपन होने के बाद इट मूव्स डाउन अग्रेसिवली ऑन द फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ तो फिर 74,000 की ये लेवल है प्रीवियस डे लो के आसपास. यहाँ पे प्राइस सस्टेन्स एंड स्टार्ट टू मूव डाउन तो वहाँ पे आई विल लुक फॉर अ सेल साइड ट्रेड क्योंकि इफ दीज वॉल्यूम्स वर फॉर बाइंग यहाँ से अग्रेसिव बाइंग आना चाहिए. इफ दैट अग्रेसिव बाइंग इज नॉट सीन देन प्राइस विल मूव डाउन फॉर सेलिंग. सिमिलरली अगर प्राइस गैप डाउन भी ओपन होता है तो फिर आई विल वेट फॉर प्राइस टू शो मी सम साइन कि लेट्स से प्राइस ऊपर जाता है फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके इट स्टार्ट्स टू मूव अप तो यहाँ पे आई विल लुक फॉर अ बाय साइड क्योंकि ये वॉल्यूम दिस जोन विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड पुश द प्राइस हायर. लेकिन अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होके इट स्टार्ट्स टू मूव डाउन तो वहाँ पे आई विल लुक फॉर अ कंटिन्यूड सेल सेगमेंट. And rather than that, price is a little bit confused, so I won't be in hurry to enter, and I will wait for price to give some confirmation either onto the buying side or to the sell side.